Hello everyone, welcome to ICI's YouTube channel. My name is Milon. Today I'm going to discuss one of the most important article from today's Hindu newspaper. Let's see the article at first. World Bank approves 1.5 billion support from for India reform plan. Very important keyword is की एक तो है World Bank and next is India reform plan. That these two are very important for upcoming prelims 2027. Question number 67 देखिए previous year question. Why we picked up this topic? This question was asked in 2025 prelims directly from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). I will show you later कि how to solve this kind of question in actual exam environment. ठीक है? This is the pure static from international organization in prelims point of view. Okay, so go through the context at first. Recently, World Bank approved $1.5 billion US dollar for India under its Development Policy Financing Program, DPF, Development Policy Financing Program. ठीक है, ये रहा हमारा context. Now, what is Development Policy Financing? What is DPF? ये आपका मन में आ सकता है कि what is the Development Policy Financing? It is a policy-based lending instrument. It is a lending instrument of the World Bank provides quality disbursing budget support directly to government. That is the very important. ये कोई institute को नहीं देगा, rather it will provide the funds to the directly to the government. ठीक है, supports policy and institutional reforms, not specific infrastructure project. ये कोई particular कोई infrastructure project के लिए ये grant नहीं है, but rather than it is a purely reforms plan. ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म करना चाहते हो कोई सेक्टर को, कोई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को, उसके लिए बजट दिया जाता है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू कीप रिमेंबर, क्योंकि यूपीएससी कैन फॉर्म क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट अलोन. राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन की व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक. इंपॉर्टेंट कुछ डेटा फैक्ट्स वी हैव टू नो, सम बेसिक्स एटलीस्ट. ओके, सम बेसिक्स. एस्टेब्लिशमेंट 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ठीक है, operation began in 1946. What is the headquarter? Washington DC in USA. These all are the important for state PCS. ठीक है, not only for UPSC but also state PCS. What is the aims and objective? Reduce poverty, promote sustainable development through financial and technical assistance. Now tell me the what is the difference between World Bank and IMF. दोनों का aims and objective में difference क्या है? Please put your thought in our comment box. Membership. Only IMF members countries can join the World Bank. That is the very important point. What is the World Bank group? Institution, main function जो होते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या कौन सा ग्रुप वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं. कि पहले आते हैं कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द IBRD, एंड दैट IBRD वाज डायरेक्टली आस्क्ड इन 2025 prelims. What is the means aims and objective? Loans to middle income and credit to the low income countries. International Development Association IDA, International Finance Corporation IFC, International Center for the Settlement of the Investment Dispute. इथे हम भी जितने सारे bodies हैं, you have to specially remember these bodies, this particular body ICSID. ICSID का काम क्या है कि resolve investment related disputes, but currently India is not a member. You have to remember this point. इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक क्या रिश्ता क्या है ना. इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड बैंक लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड बैंक लार्जेस्ट बोरोवर. डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड IMF. चलिए मैं ही बोल देता हूँ कि ऑल द बोथ इंस्टीट्यूशन इमर्ज फ्रॉम द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. दोनों ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जन्म लिया था. बट वर्ल्ड बैंक प्राइमरली फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. जैसे कि अभी देखा कि वर्ल्ड बैंक हेल्प करते हैं कि जो लो इनकम कंट्रीज है, लोअर इनकम कंट्रीज, उन लोगों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं कि लॉन्ग टर्म एक. बट IMF फोकसेस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. IMF मोरली प्रिसाइजली अलाइनमेंट विथ कि जो एक्सचेंज रेट होता है, जो बैंक होता है, जो RBI, जैसे कि मान लो RBI का जो पॉलिसी है, तो इसके साथ IMF का डायरेक्ट लिंक रहता है. तो इसलिए कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ IMF का डायरेक्ट संबंध है. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ हियर इज ए सैंपल MCQ. प्लीज ट्राई टू आंसर इट. नाउ कमिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट. राइट, क्वेश्चन नंबर 67. कंसीडर the following statement in respect of the International Bank for the Reconstruction and the Development IBRD. It provides loans and guarantees to middle income countries. I told you
अगेन एंड अगेन कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, वेरी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट की गलत होने का संभावना बहुत ही कम है। ऐसा यूपीएससी में मैंने तो नहीं देखा, लेकिन दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट कि यूपीएससी ऑलवेज फोकस ऑन की पॉजिटिविटी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिविटी है मतलब ये स्टेटमेंट सही है। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब नाउ पुट योर कॉमन सेंस कि एक बैंक है आईबीआरटी, आईबीआरटी को छोड़ दीजिए, एक एसबीआई, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इट आईबीआरटी के बदले में एक स्टेट बैंक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो एसबीआई सिंगल हैंडेडली टू हेल्प, कोई भी हमारे इंडिया में कोई काम हो रहा है, आप एसबीआई सिंगल हैंडेडली उसको हैंडल कर रहे हैं, कि दिस इज नॉट द पॉसिबल, ठीक है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट सिंगल हैंडेडली की कोई भी स्कीम रन कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है और भी कोई भी इंस्टीट्यूट का सपोर्ट नहीं है, सिंगल हैंडेडली रन कर रहे हैं, तो ये दिस इज अ प्योरली इम्पॉसिबल एक टास्क है। और ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये नॉट ओनली फॉर इंडिया, दिस इज द होल वर्ल्ड, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, right? So this will be the wrong statement. You have to just identify the wrong statement. It was established to help Europe rebuild after the World War II. If you even do not know the statement, then you can easily eliminate the statement 2 and you can reach your answer 1 and 3, right? So this is the process how you solve your question. How can you get extra 2 marks? Even this simple question, even many students got wrong, right? But I am teaching you how to solve this kind of question in actual exam environment, how to think like UPSC examiner, how to identify positive statement, how to identify negative statements, right? So these all are the important data facts. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच।